So hello students. Previous session we have completed 22nd problem. Now we are coming to the 23rd problem. Again we have variable growth rate model, what we have seen in the previous session, previous problem. Now see the 23rd. BB Limited is currently selling for rupees 36. This is the current market price of share. Actually current market price of share use करेंगे decision लेने के लिए. पहले इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम कर लेना, फिर ये इंट्रिंसिक वैल्यू और मार्केट प्राइस दोनों को कंपेयर करके डिसीजन लेना है कि वेदर शेयर शुड बी परचेस्ड और इज इट द टाइम टू सेल द शेयर. तो इसकी जरूरत नहीं है हमको 36 रुपीज. पेइंग रुपीज 1.80 इन डिविडेंड. तो करंटली इट इज पेइंग अ डिविडेंड ऑफ 1.80. तो करंट डिविडेंड का मतलब डीओ. करंट डिविडेंड मींस डीओ 1.80. Investors expects dividend to grow at a constant rate of 15% a year for the next 5 years. आने वाले 5 साल तक ग्रोथ रेट 15% रहेगा. तो G डैश इज इक्वल टू 15% 0.15. ये ग्रोथ रेट हमेशा नहीं रहेगा, सिर्फ 5 साल तक रहेगा. तो ये सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड कहते हैं. सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड N इज इक्वल टू 5 years. और ये 5 years में 15% ग्रोथ रेट. उसके बाद After this, the growth rate is expected to shrink to 5%. बाद में 5% हो जाएगा. Right? Calculate the maximum price which an investor with a holding period of 5 years and a required rate of return of 14%. Required rate of return KE 14% would be willing to pay for the share price. What is the price at which he is willing to pay for the share? And what is the intrinsic value? And a share का real worth क्या है? Intrinsic value क्या है? ये मालूम करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गिवन द इंफॉर्मेशन. स्टेप 1 फाइंडिंग द डिविडेंड स्ट्रीम. जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में मालूम करे थे, यहां पर भी 5 साल का डिविडेंड स्ट्रीम मालूम करेंगे. ये 5 साल सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड. D1 इज इक्वल टू DO इंटू 1 प्लस G डैश टू द पावर ऑफ 1. G डैश यहां पर 15% है, तो DO जो है 1.80 है, ये 15% 0.15. तो 1 प्लस 0.15 इज 1.15. तो 1.15 इंटू 1.8 2.07. तो पहले साल का डिविडेंड आ गया एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर. एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर DO इंटू 1 प्लस G डैश टू द पावर ऑफ 2 स्क्वायर कर देंगे. तो 1.15 ये दोनों को ऐड कर लिए तो 1.15 आ गया. तो 1.15 को स्क्वायर करेंगे इंटू 1.8, यू विल गेट दिस वैल्यू. D3 DO इंटू 1 प्लस G डैश टू द पावर ऑफ 3. नाउ क्यूब कर देंगे इंटू 1.8, like that to the power of 4 to the power of 5. So we got the dividend stream for the first 5 years. This is step number 1. Now step number 2, calculating the present value of dividend stream. Finding the present value of dividend stream. तो टेबल बना देंगे year dividend stream, PV factors, present value of dividend stream. तो डिविडेंड 5 साल का यहाँ पर दे दिया. अब PV factors 14%. अब ये कैलकुलेटर यूज करो. 1 divided by 1.14. 1 divided by 1.14 इज इक्वल टू मार दो, आपको फर्स्ट ईयर आ गया. फिर इज इक्वल टू सेकेंड ईयर, फिर इज इक्वल टू थर्ड ईयर, इज इक्वल टू फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर. लाइक दैट PV फैक्टर्स यू कैलकुलेट. नाउ मल्टीप्लाई डिविडेंड स्ट्रीम विद PV फैक्टर्स टू गेट PV ऑफ डिविडेंड स्ट्रीम. ये दोनों को मल्टीप्लाई करो, ये वैल्यूज आ गए. टोटल कर दो PV ऑफ डिविडेंड स्ट्रीम. आधा प्रॉब्लम यहां पर खत्म हो गया. PV ऑफ डिविडेंड स्ट्रीम मालूम करना हाफ कंप्लीट हो गया. अब रिमेनिंग हाफ, थर्ड स्टेप, the price of share at the end of 5 years. पहले 5 साल तक सुपर नॉर्मल ग्रोथ पीरियड था, वो हो गया. अब उसके बाद नॉर्मल ग्रोथ रेट पीरियड शुरू हो गया. अब यहां एज्यूम ये करना है कि नॉर्मल ग्रोथ रेट 5%, इट विल गो फॉर एवर. कांस्टेंट ग्रोथ रेट, कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 5%. सो द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 5 years एज्यूमिंग ए कांस्टेंट ग्रोथ रेट ऑफ 5%. यहां पर 5% दे दिया. तो P5 इज इक्वल टू D6 डिवाइडेड बाई KE माइनस G. यहाँ 5 है तो यहाँ पर 6 लेंगे, जैसा प्रीवियस प्रॉब्लम में करे थे. अब D6 वी डोंट हैव, हमारे पास D6 नहीं है, D5 है. हियर वी हैव D5. तो D5 इंटू 1 प्लस G डिवाइड बाई KE माइनस G. तो D5 3.62043 यहाँ पर है, और 1 प्लस G ग्रोथ रेट 0.05, KE 0.14 माइनस 0.05. तो अल्टीमेटली P5 का वैल्यू आ गया. P5 का मतलब व्हाट इज द प्राइस ऑफ शेयर एट द एंड ऑफ 5 years. 5 साल के बाद प्राइस क्या होगा? तो 5 साल के बाद 42.24 होगा. तो अब इसका स्टेप नंबर 4, फाइंडिंग द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ P5.
जो वैल्यू हमको 5 साल के बाद आने वाला है उसका आज का वैल्यू क्या है, व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू. तो पीवी ऑफ P5, PV of P5 is equal to P5 into PV factors. P5 into PV factor at the rate of 14% for 5 years. यहाँ पर है 14% 5 years के लिए 0.519 है. तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 42.24 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.519 तो 21.92. तो जो पैसे 5 साल के बाद इतने आने वाले हैं उसका आज का वैल्यू क्या रहेगा 21.92 हो गया. Now last step, finding out the intrinsic value. Intrinsic value is the sum of PV of dividend stream plus PV of P5. PV of dividend stream plus PV of P5. ये 9.2393 और 21.92 ये दोनों को ऐड कर दिए तो आपको 31.16. That is the intrinsic value of share. This is problem number 23. Take a pause of the screen and copy it down the complete solution. Come on. Now we'll start the next problem, that is 24th problem. 24. A company is currently paying a dividend of rupees 3.50. Current dividend means DO 3.50, which is expected to grow at 15% for the next 4 years. So supernormal growth period is 4 years. N is equal to 4. We'll write the information here. So this is problem number 24. 24, the company is currently paying a dividend, so DO 3.50, then which is expected to grow at 15%, so G dash 15%, 0.15 for the next 4 years. N is equal to 4 years. It then levels off, then next growth rate is 8%, 0.08. If it capitalizes, K is equal to 12%, 0.12. What is the market price of share? Intrinsic value is equal to how much? देखिए, exactly same procedure you have to do. Exactly same procedure. Information दिया, पहले 4 साल तक ग्रोथ रेट 15% रहेगा और 4 साल के बाद ग्रोथ रेट फिर 8% हो जाएगा. तो हमको P4 मालूम करना है. We have to calculate P4, जैसा previous problem में P5 मालूम करें. P4, cost of capital, required rate of return 12%. I'll give you the answer for this problem so that you can do it yourself and verify the answer. The answer for this problem is PV of dividend stream. PV of dividend stream is 14.967. See here, while doing the problem थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है राउंडिंग ऑफ एरर में, क्योंकि पॉइंट के बाद कभी 3 डिजिट्स लेते कभी 4 डिजिट्स लेते, तो इसमें राउंडिंग ऑफ. और जब भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो बेटर टू टेक 3-4 डिजिट्स. डोंट रेस्ट्रिक्ट योर कैलकुलेशन टू 2 डिजिट्स. जब लास्ट कैलकुलेशन खत्म होने के टाइम पे 2 डिजिट्स करेंगे, लेकिन इन बिटवीन इंटरमीडिएट कैलकुलेशंस में आप जितना कम डिजिट्स लेंगे उतना एक्यूरेसी चले जाएगी. तो 3 डिजिट्स या 4 डिजिट्स या 5 डिजिट्स तक ले सकते हैं आप पॉइंट के बाद. तो 14.967 you will get PV of dividend stream, right? अब then P4 का वैल्यू आपको आएगा 165.28 और PV of P4 105.12. लास्ट में इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू 120.087. This is the answer you will get if you try yourself. Because if I simply copy it down on the board screen, you will not learn much. You will learn only by practicing yourself. I have explained in 2 problems in detail.
how to find out the intrinsic value when there is variable growth rate. This answer. Copy down the answer and try to do it yourself. This is the end of problem number 24. Now I am moving on to problem number 25. See the problem, 25th. Problem number 25. Find the intrinsic value of the following shares. तो two different shares are given. दोनों का अलग अलग मालूम करना है, A share and B share. तो A share के लिए देखिए, next year dividend per share ₹3.50. नेक्स्ट ईयर डिविडेंड का मतलब D1 हो गया, ये करंट डिविडेंड नहीं है, ये D1 हो गया. तो D1 इज गिवन 3.50. ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड 10% पर एनम, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 15% पर एनम. तो ए शेयर के ऊपर कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल है, एक ही ग्रोथ रेट है, 10% इज द ओनली वन ग्रोथ रेट गिवन, सो इट्स अ कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल, राइट. लेकिन बी शेयर के ऊपर ₹2 इज द D1 वैल्यू, फर्स्ट 4 years 10% पर एनम, ग्रोथ रेट जो है 10% रहेगा, कब तक? 4 साल तक, और आफ्टर 4 years एट 6% इंडेफिनेटली. तो मल्टीपल ग्रोथ रेट. तो एक ही प्रॉब्लम में आपको दो अलग अलग शेयर्स है. ए शेयर जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ रेट मॉडल है, और बी शेयर जो है ये मल्टीपल ग्रोथ रेट मॉडल है. और रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ए शेयर के लिए 15% है और बी के लिए 14%. So you can be able to get you can be able to do it yourself, because already so many problems we have done. So for A share, it is a constant growth rate model. Constant growth rate model. So what is given in the problem? D1 is equal to 3.50. Growth rate is 10%. KE is equal to 15%, 0.15. And PO is equal to D1 divided by KE minus G. 3.50. Intrinsic value is ₹70. We got the intrinsic value ₹70. Constant growth rate model. Now share B. Share B के लिए दिया है D1 is equal to ₹2. Then D2 is equal to D1 into 1 plus G. That is equal to 2 into 1 plus growth rate is 10%, 2.20. D3 is equal to D2, 2.20 into 1.10, 2 point. D4, D3 into 1 plus G. तो 2.40 into 1.10, 2.66. ये प्रॉब्लम है, DO नहीं दिया. D1, D2, D3, D4 डायरेक्टली हम मालूम कर सकते हैं. D1 का वैल्यू प्रॉब्लम में दे दिया है. एक्सपेक्टेड डिविडेंड एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज ₹2. अब सेकेंड ईयर में जो ₹2 है उसमें ग्रोथ हो जाएगा 10%, 10% बढ़ जाएगा, तो ₹2 के बजाय ₹2.20 हो जाएगा नेक्स्ट ईयर. फिर वो ₹2.20 के ऊपर 10% बढ़ेगा, तो ₹2.40. फिर 2.4 के ऊपर 10% बढ़ेगा, 2.66. These are the dividend stream. This is the dividend stream. Now PV of dividend stream. Year dividend PV factors at the rate of, what is the rate? 14%.
then PV of dividend stream 1 2 3 4 2 rupees 2.20 2.40 2.66 14% 0.877 0.769 0.675 0.592. So if you multiply this and add up, you are going to get 6.654. This is the PV of dividend stream. Now step 5, P4 is equal to D5 divided by KE minus G. D4 into 1 plus G divided by KE minus G. तो P4 is equal to D4 कितना है 2.66 है. 1 plus growth rate कितना हो जा रहा बाद में फिर? After 4 years, what is the growth rate? It is 6%. 0.14 minus 0.06. So P4 का वैल्यू आ जाएगा 35.245. Then PV of dividend, PV of P4 35.245 into PV factor कितना है 0.592. मल्टीप्लाई कर दिया तो 20.865. लास्ट स्टेप, इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू पीवी ऑफ डिविडेंड स्ट्रीम 6.654 प्लस पीवी ऑफ P4 20.865. अल्टीमेट आंसर इज 27.52. This is the complete solution of problem number 25. Now we come to the problem number 26. The current dividend of an equity share of Polar Technology is rupees 3. Current dividend means DO. DO, rupees 3. Polar is expected to enjoy above normal growth rate of 40%. Above normal, G dash 40%, 0.40 for a period of 5 years. N is equal to 5 years. Thereafter, the growth rate will fall and stabilize at 12%. तो G is equal to 12% point. तो पहले 5 साल तक ग्रोथ रेट 40% रहेगा और 40% के बाद क्या हो जाएगा वो 12% हो जाएगा फॉरएवर. तो 5 year period. Then equity investors require a return of 18%. K is equal to 18%, 0.18. What is the intrinsic value of the equity share? That's it. तो exactly same. अब ये प्रॉब्लम का भी मैं सॉल्यूशन दे दूंगा. You try yourself. Same 5 steps you have to find, apply. First, dividend stream for 5 years. तो D1, D2, D3, D4, D5. अब उसके लिए क्या करेंगे DO इंटू 1 प्लस जी डैश टू द पावर ऑफ 1, फिर DO इंटू 1 प्लस जी डैश टू द पावर ऑफ 2, फिर DO इंटू 1 प्लस जी डैश टू द पावर ऑफ 3, 4, 5. Like that you calculate dividend stream for 5 years. Then present value of dividend stream table बनाइए. Year dividend PV factors at the rate of 18%. PV factors at the rate of 18%. 1 year, 2 year, 3 year, right? Then present value of dividend stream. Then value of share at the end of 5 years, P5. P5 is equal to D6 divided by K minus G. D6 नहीं है तो D5 into 1 plus G. D5 into 1 plus G divided by K minus G. तो आपको P5 आ जाएगा. फिर present value of P5 मालूम करेंगे. Then intrinsic value.
So I'll give you the answer for this problem. PV of dividend stream 25.7904 and P5 value 301.187. Then PV of P5 131.62. Intrinsic value 157.41. That's it. This is the answer you will get. If you solve the problem, you will get PV of dividend stream ये आएगा P5 PV of P5. थोड़ा slightly आंसर आपका चेंज भी हो सकता है ड्यू टू राउंडिंग ऑफ, यानी पॉइंट के बाद थोड़ा सा फिगर अगर चेंज हो गया तो डजंट मैटर, इट इज एन एरर ऑफ राउंडिंग ऑफ. तो राउंड ऑफ करने का एरर रहता है, उसको इग्नोर कर देना, नेग्लिजिबल. अराउंड दिस आंसर यू विल गेट. So one last problem is there, 27th problem. That 27th problem we'll discuss in the next session.